यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं अब रिलेटिव मोशन इन 2D। आपको जैसे हमने रिलेटिव मोशन इन 1D पहले पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे उस स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में कैसे आएंगी मैं एक बार आपको भी समझाऊंगा। देखो, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, पहले रिलेटिव मोशन का यूज क्या है। वैसे मैंने आपको 1D में भी एक्सप्लेन करी थी ये चीज कि रिलेटिव मोशन इन 1D में हम क्या पढ़ते हैं और उसका यूज क्या है, लेकिन आपको रिलेटिव मोशन इन 2D में भी एक बार एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मान लो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जब रेनफॉल होता है या बारिश आती है, उस टाइम पर क्या होता है, लेट्स सपोज द रेन जो है वो सिंपल सीधी गिर रही है, तो वी ऑब्जर्व कि मान लो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। मतलब आई एम एक्टिंग एज अ ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन रेस्ट। मतलब मैं देखता हूं कि जो रेन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू जो रेन की स्पीड है या रेन की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, वो डायरेक्टली नीचे है। अब मैंने क्या करा, रेन गिर रही थी, मैंने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने भागना शुरू करूंगा तो होगा क्या, जो रेन है वो मेरे को सीधी नहीं दिखाई देगी, वो मेरे को दिखाई देगी कि वो आगे से किसी एंगल पे आ रही है। अब एक बच्चा, मान लो तुम में से कोई मेरे से पूछता है, सर आपने मान लो 20 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू किया और पहले रेन गिर रही थी 30 मीटर पर सेकंड से, तो नाउ यू विल ऑब्जर्व द रेन विद हाउ मच वेलोसिटी एंड एट विच एंगल यू विल ऑब्जर्व इट। ये क्वेश्चन वो बच्चा मेरे से खड़े होके पूछता है। तो देखो, मैं उसको क्या जवाब दूंगा या उसका क्या आंसर होना चाहिए रिलेटिव मोशन में। हम वो कितना होगा, कैसे होगा, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम दैट इज वी आर एबल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। क्लियर? इसके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक आती है रिवर मैन प्रॉब्लम्स। उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास कि रिवर फ्लो कर रही है इन डायरेक्शन दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। रिवर मूव कर रही है और मैंने उस एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना है, मतलब मुझे रिवर क्रॉस करनी है। अब देखो बच्चों, होगा क्या, अगर रिवर सीधी चल रही है, एक बच्चा मेरे को कहेगा सर आप मिनिमम टाइम में वहां पर पहुंचो, और दूसरा वो कहेगा सर ठीक है, रिवर इतनी स्पीड से बह रही है, आप अपने आप को कितनी वेलोसिटी दोगे इफ यू डायरेक्टली रीच एट अपोजिट साइड। मतलब दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर दो टाइप के ऑब्जर्वर्स हैं। एक तो है मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि ग्राउंड से उसका कितना है, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि उसी मैन की वेलोसिटी बॉट के रिस्पेक्ट में कितनी है। मतलब सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आर डिस्कस दैट वी विल डिस्कस इन रिलेटिव मोशन इन 2D। ये एंड में मैं आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा कि मान लो दो चीजें हैं, वो कोलाइड कर रही है किसी जगह पे आकर, आपने दो प्रोजेक्टाइल गिरे, वो कोलाइड कर रहे हैं। अब वो कोलाइड कर रहे हैं तो आप मेरे को कहोगे कि सर बताओ कितने टाइम में वो कोलाइड कर रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं। तो टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गो विद द पैरामीटर विच इज द रिलेटिव मोशन। देखो, मैं वही कर रहा हूं, वी नो, मैं यहां पे वही कर रहा हूं। मैं यहां पर दो टाइप के ऑब्जर्वर्स ले रहा हूं। दिस इज द O, दिस इज O डैश। ये मेरे पास P पॉइंट है, मान लो कोई। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to O, and this is the position vector of P with respect to O dash, and you can directly say कि this is the position vector of O with respect to O dash. Right? You have taken a point P. We are observing the point P from the two different points, here two different observers which are O and O dash. So you can directly write from the vector addition, that is the triangular law. This vector and this vector, it is equal to this vector resultant. So you can write position of P with respect to O dash, it is equal to position of P with respect to O plus position of O with respect to O dash. लिख सकते हैं हम ये। तो it means it will become the relation between the position of the point with respect to the position of point P with respect to two observer, that is O and O dash.
सेम अगर आप इसके ऊपर और काम करना चाहते हो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, देखो अगर आपको P का O के रिस्पेक्ट में निकालना है, O डैश के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करो, बीच में एक इंटरमीडिएट डाल दो, जैसे आपने यहाँ पे O डाला है, इट विल बिकम पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O प्लस पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू O डैश, एंड इन सच अ वे यू कैन राइट द इक्वेशन। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करता हूं, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो देखो क्या चीज बन जाएगी, इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डैश डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O प्लस डी बाई डी टी ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू O डैश। तो इट विल बिकम व्हाट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डैश, इट इज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O प्लस वेलोसिटी ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू O डैश। राइट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं अगेन, differentiate again, then we will get acceleration of P with respect to O dash, it is acceleration of P with respect to O plus acceleration of O with respect to O dash. So we will get such type of relations that will be giving the relative motion in 2D. So we have written the relations between the position vector, velocity vectors and the acceleration vectors. क्लियर है? देखो अगर हम चाहें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो वो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे, मान लो आपने लिखनी है वेलोसिटीज के बीच में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे आप बी और ए दो ऑब्जर्वर ले रहे हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए it is equal to initial velocity of B with respect to A plus acceleration of B with respect to A into time. Similarly, you can write for displacement as also. Displacement of B with respect to A, it is equal to displacement of, that is ut plus half at square. U B with respect to A into T plus half acceleration of B with respect to A into T square. Similarly, you can write the third equation, that is U of B with respect to A B with respect to A plus 2 into A vector dot S vector. मतलब V square is U square plus 2A into S. This is also B with respect to A, also B with respect to A. Clear है? These are the actual equations for the
केस ऑफ दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्लियर? हम इसके ऊपर जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जैसे आप देखें, प्रॉब्लम लिखें, देखो ना, यस, राइट डाउन द प्रॉब्लम्स। देखो, a bird is flying towards east with a speed of 4 meters per second. Full stop. Then a wind starts blowing with a speed of 3 meters per second towards north. Calculate velocity of bird with respect to wind. Velocity of bird with respect to wind. देखो, हमें पता है विंड किस डायरेक्शन में चल रही है। बर्ड इज मूविंग या बर्ड इज फ्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। This is basically the velocity of bird with respect to ground. कितने चल रहा है? 3 meter per second, 4 meter per second. Right? This is the velocity of bird with respect to ground. Next is the velocity of wind with respect to ground. It is 3 meters per second towards north. 3 meters per second towards north. Calculate velocity of bird with respect to wind. We have to calculate velocity of bird with respect to wind. आप इंटरमीडिएट डाल दो इसमें ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड इंटरमीडिएट डाल देंगे तो देखो बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, प्लस अगर उल्टा करके लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ये क्या बन रहा है,
What is the velocity of bird with respect to wind? So it is bird with respect to ground. The bird with respect to ground is in this direction, 4 meter per second. And negative of wind with respect to ground. नेगेटिव करेंगे तो इसमें ये इधर आ जाएगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये 3 है, 4 है. इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड. द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड इज velocity of bird with respect to ground minus plus velocity of ground with respect to wind. That will be minus wind with respect to ground. तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनका रिजल्टेंट के बीच में आएगा. अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा भी निकाल सकते हो. तो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो वी कैन डायरेक्टली राइट की वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट, plus 4 square. That will come out to be 5. And direction क्या आएगी? अगर ये अल्फा एंगल है तो tan अल्फा is this will be 4/3. मतलब अल्फा is equal to how much? 4/3 is 53 degree. Clear है? Next. देखो नेक्स्ट देखो आप, डेट इज द रेन मैन प्रॉब्लम्स. देखो हमारे पास क्या होता है इन रेनमैन प्रॉब्लम्स. वी कंसीडर 3 वेक्टर्स these are first, that is the velocity of rain with respect to ground. Next, velocity of rain with respect to man.
नेक्स्ट, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. Now how to relate all these things? कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं? देखो, we have three vectors. You can write velocity of rain with respect to ground. इसमें कोई भी एक वो डाल दो बीच में, इंटरमीडिएट. It will be velocity of rain with respect to man plus velocity of man with respect to ground. You can write directly like this. Rain with respect to ground is rain with respect to man plus man with respect to ground. आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो डायरेक्टली. राइट. नेक्स्ट, जैसे आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा समझ आएगी कैसे इसको इस्तेमाल करना है. देखो, a person moving with four meter per second observes rain is falling vertically downward at an angle of falling vertically downward with 3 meter per second. Calculate magnitude and direction of velocity of rain with respect to ground. Calculate magnitude and direction of velocity of rain with respect to ground. देखो, person moving with 5 meter per second, मतलब ये क्या गिवन है हमें? 4 meter per second. मतलब हमें गिवन है velocity of man with respect to ground. मान लो इधर की तरह चल रहा है 4 meter per second, मतलब we can write it as 4 I cap. Observes rain is falling vertically downward with 3 meter per second. मतलब this is the velocity of rain with respect to man, which is vertically downward, and how much? 3 meter per second. It means it is 3 J cap. उसने पूछा what is the velocity of rain with respect to ground. हमें पता है rain with respect to ground क्या होगा? Rain with respect to man plus man with respect to ground. Rain with respect to man कितना है? -3 J cap. और man with respect to ground कितना है? 4 I cap. That means what is rain with respect to ground? It is this. अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है it will be under root of 3 square plus 4 square. It is how much? 5 meter per second. क्लियर है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे.
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे यस। Next question. A person standing on road has to hold his umbrella at an angle of 60 degree with vertical. First of all, he starts moving with velocity 20 meter per second and observes rain is hitting his head vertically downward. Calculate velocity of rain first with respect to man and second with respect to ground. देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक पर्सन जो है रोड पे खड़ा है और उसका अपना अम्ब्रेला जो है, he has to hold his umbrella at an angle of 60 degree with vertical. सिक्सटी डिग्री विद वर्टिकल, तो वो रोड पे खड़ा है, उसको 60 डिग्री पकड़ना पड़ता है. मतलब इट इज गिवन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ फ्रॉम 60 डिग्री टू वर्टिकल इट इज टू पॉसिबिलिटीज, वेदर इट इज दिस पॉसिबिलिटी or whether it is this possibility. तो देखते हैं कौन सी हो सकती है. फिर क्या, he starts moving with 20 meter per second, मतलब velocity of man with respect to ground. It is 20 meter per second. And observes rain is hitting his head vertically, मतलब velocity of rain with respect to man, it is directly in this direction. मान लो ये तो V1 है, ये भी या तो ये होगा या ये होगा, ये है V2. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज U 20 I cap, इट इज V2 माइनस ये क्या,
और हम जानते हैं रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, तो विच इज अ पॉसिबिलिटी विच हैव टू कंपोनेंट्स, एंड रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो सकता है कि ये इन दोनों, बिकॉज ये आई कैप और माइनस जे कैप में, तो इनका रिजल्टेंट यही हो सकता है, तो इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने इसको V2 लिया है तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, V2 cos 60 मतलब V2/2, और ये क्या बन सकता है, V2 sin 60, sin 60 is √3/2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज V2/2 आई कैप माइनस जे कैप। और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, व्हाट इज द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज V2 माइनस जे कैप प्लस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 20 आई कैप। तो मैंने इसको भी V2 बोल दिया, इट इज V1, इसको V1 बोलो, या एक काम करो आप इसको V2 बोल दो और इसको V1 बोल दो, इसको V1 बोल दो, राइट। अगर अब मैं इसको इक्वेट करूं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इधर आई कैप का कंपोनेंट कितना है V2/2, इधर 20, तो V2/2 इज 20, so what is V2? 40. This is the velocity of 40 आ गया। और अगर मैं जे कैप कंपोनेंट को इक्वेट करूं तो we know V2 √3/2 it is equal to V1, it is 20, तो V1 is 20√3, 20√3, तो V1 is 20√3, क्लियर है। तो V2 is what? V2 is the velocity of rain with respect to ground, and this is what? Velocity of rain with respect to ground, and this is velocity of रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्लियर है। इसकी डायरेक्शन हमें पता लग गई और इसका एंगल भी हमें पता है, सब कुछ कैलकुलेशंस हो गए। तो इस तरीके से हमको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जब भी हमसे पूछा जाए इसके बारे में, क्लियर है सबको। देखो नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम्स। Similarly, in these problems, three vectors are used as, again, first one is river with respect to ground. Velocity of river with respect to ground. The next one is river with respect to man with respect to ground. This is called velocity of man
with respect to ground. This is velocity of man with respect to still water. तो इसमें फिर हम वही रिलेशन लिख सकते हैं, देखो क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो फिर हम वही रिलेशन यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट या टू सॉल्व द रिवर मैन प्रॉब्लम्स. क्लियर है सबको? लिखेंगे इसको प्लीज.